Multiple children have died of kidney failure following alleged consumption of contaminated cough syrup in Madhya Pradesh and Rajasthan. Reportedly, over the last 2 weeks, 2 children in Rajasthan have died while several others fell sick after consuming a generic cough syrup. 6 children died in Chindawara district in Madhya Pradesh due to kidney failure allegedly after consuming the cough syrup. Doctors confirmed that 8 other children aged between 1 and 5 years fell ill in Banswara district after consuming the syrup last week. Following the deaths, the Rajasthan government has banned 22 batches of the syrup and ordered immediate recall of the existing stock. The government's nodal agency for disease surveillance has collected water and entomological drug samples from hospitals and other sites in these 2 states. The samples will be tested to rule out possibility of any infectious disease. Simultaneously, state drug authorities are testing the drug samples, results of which are still awaited. प्रारंभिक रूप से तो ये जो दवा है ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो इस दवा के हैं वे प्रारंभिक रूप से बच्चों में देखने में आए हैं जो कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ब्रीथलेसनेस इस तरह के हैं, हेलुसिनेशंस। तो ये उसके प्रारंभिक रूप से उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। हमने दवा के नमूने लिए गए हैं भरतपुर, सीकर, झुंझुनू से और जो भी बैचेस हैं उसकी रोक लगा दी गई। करीब 21 बैच हैं जिन पर रोक लगाई गई है और जांच के लिए नमूने लेबोरेटरी में जमा करा दिए गए हैं और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी।